अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी पे। सबसे हम पहले देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं। गो वो ऑब्जेक्ट एक्स ऑब्जेक्टस पे फोर्स अप्लाई वारिया फोर्स तथ इफेक्ट मैनी इफेक्ट्स ये ओत्र एज डिस्कस्ड अर्लियर ओत्र वो काइनेटिक एनर्जी मज वो इफ द फोर्स चेंज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दपा ये फोर्स चेंज करान वेलोसिटी इफ द फोर्स changes velocity of object तथ वन अगर फोर्स चेंज कर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट द वर्क डन इज डूइंग इज स्टोर्ड अप इस वर्क डन अत मज कर स्टोर ग इन द फॉर्म ऑफ stored in the form of it is kinetic energy so work done is stored in the form of it is kinetic stored in the form of it is kinetic energy in the form of it is kinetic energy तथ वन यह वर्क डन चेंज कर वेलोसिटी इस वर्क डन कर स्टोर ग इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक इंस्टेड ऑफ दिस अगर वो इफ द फोर्स डज नॉट चेंज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट when the applied force does not change the velocity of object but instead change the position or configuration तथ वन potential energy मतलब सीधे वो potential energy की by virtue of change its position or configuration तथ वन potential energy change of configuration change of configuration at potential energy has two types गोडनिक टाइप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोयम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आज किस लेक्चरस मज पढ़ो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सुबह पढ़ो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गोडनिक वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कथ वन Gravitational potential energy of an object is defined as the energy possessed by an object to rise certain height against the gravity. Gravitational potential energy is directly defined as the energy possessed by an object to rise certain height against gravity. So हम ऐसे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सके एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू राइज सर्टेन हाइट अगेंस्ट ग्रेविटी अगर इस नमो कंसिडर कर मास m कंसिडर कर मास m यह थो प्लेसड एट ए हाइट ऑफ यस हाव तुम डायग्राम अमिच यह जन थो ब्लॉक ये यह गो एच सर्टेन हाइट यह थो ये एच थो क्या सर्टेन हाइट प्लेसड एट ए हाइट एच above the ground. Placed at a height h above the ground. As is force required to rise the object equal to mg of the mass into gravity of the object. Force required to rise the object is equal to the force is required is barabar mg of the object. mg mass into gravity mg mass into gravity. So if the object rises against the force of gravity, as the object is rising against the force of gravity, some amount of work done on the object. So barabar ये force कोई object rise against the force of gravity कि amount of work done कि amount of work done. So work done बराबर work done बराबर बराबर force into displacement. Force into displacement. Work done बराबर force into displacement बराबर W is equal to M into G into H. बराबर M G H.
को मास ग्रेविटी से हाइट नेवान बराबर इस फोर्स मज कोर वर्क डन सह कह वर्क कर ऑब्जेक्ट को राइज अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सम अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट कह अमाउंट ऑफ वर्क डन पे गसान सह वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर वो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थोड़ा एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर वो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर वो वर्क डन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वर्क डन बराबर वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू mgh वर्क डन बराबर ये mghs एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन वर्क डन इज इक्वल टू द mgh एनर्जी गेनड बाय द ऑब्जेक्ट इस एनर्जी गेन कर सह बराबर mghs एनर्जी गेनड बाय इट सह बराबर mghs when in case दबा अगर ये केस when in this case potential energy E of an object raised to the height h दबा अगर अत केसस मज potential energy potential वर्क बदल नमो potential energy E raised potential energy A raised to height h above the ground सो हम कह सकते हैं ये बराबर तेल mghs ये बराबर तेल mghs तेल हेको सीधे वन EP बराबर mgh बराबर mghs वन वो अगर ये डायग्राम बनाओ डायग्राम अगर बनाओ ये गई पार्ट 2 ये गो B ये गो A ये गई पार्ट 1 it does not दबा ये gravitational potential energy does not depend the distance गो मान distance गो मान सोरे पाथ इनिशियल मान डिस्टेंस सोरे पाथ कवर करो मान डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट कह पॉइंटन तान डिस्प्लेसमेंट अगर कड़न सह कह पॉइंट मान डिस्टेंस दबा ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करान इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करान डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बट ग्रेविटेशनल एनर्जी डिपेंड करान डिस्टेंस मान बट इंस्टेड ऑफ इट बट द डिस्प्लेसमेंट difference between initial and final height of the object distance between initial and final height of the object at पे depend करा hence the path along the उस दुश्मन मान displacement पे depend करा depends on displacement ये depend करा displacement पे depend on displacement so मान displacement difference between initial and final height so gravitational potential energy depend on distance distance traveled by the object but instead of displacement depend kara displacement is direct is initial to final position difference between initial and final height of the object so is heko when it path A to B ये distance पे करा travel depend किस से करा depend काथ पे displacement पे so एमन path मज आइस so hence the path along A and B amon same displacement amon this way same
डिस्प्लेसमेंट सबिक सिलेक्शन बाकी वसलम सबिक लेसनस मज पढ़ो क्या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आज पढ़ो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या अगर लेक्चर अपलोड कर सह अपलोड ग 2G नेटवर्क सुबह पढ़ो बे बाकी वसलम।